Hello everyone, welcome back in Creative English Academy. Dear friends, today we are going to learn this beautiful poem written by Louisa May Alcott. And the title of the poem you can see here, The Rock and the Bubble. This poem written by Louisa May Alcott is very beautiful poem. It's a story-like poem where at the end of this poem, the poem leaves a beautiful message behind, and the message is all of us. So without any delay, let us start. First of all, we learn something about the poet. So as I told you, Louisa May Alcott, she is the poet of this poem. So she born on 19 November 1832 and died on 6 March 1888. She was an American novelist, short story writer and poet. In her early years, Louisa did variety of tasks like teaching. In her struggling age, she even became teacher, sewing and houseworks to support her family. At the age of 16, she began writing books and poems. So very early at the age of 16, she started writing, and she started as a writer, as a poet, her career. So Alcott wrote about growing up with her three sisters in Little Woman, as she wrote a long book, a novel, Three Little Women, and there in this book she wrote about her three sisters, which was published in 1868. It had sequels such as Little Men, and then influenced by this one, and again Little Men in 1871, and Joe's Boys, another one, 1886. These some of her very famous literary work. Now we are going to head here her the poem that we wish to learn here. So as I told you, this poem is basically what? It's a conversation. In this poem we will find conversation between two characters. So the characters which talks with each other. The first one is the rock, jutted one fixed rock here in the sea, and another in one is a bubble. And the scene happens on the seashore. समुंदर के किनारे पे ये पूरा scene हो रहा है. And there is a nest of a bird and a mother bird with her birdlings. She is listening everything happening here. So we must understand here, when we learn the poem, actually our role is what? Our role is like these birds and birdlings, and we are going to learn a lesson from the rock and the bubble, what happened with them. See, so the bubble demands, it flows away from longer distance, and it demands that, hey clumsy rock, shouts and says, hey clumsy rock, move aside and make way for me, I am the queen of the ocean, the bubble says. And the rock which is fixed in the sea, which cannot move from its place, so it says, little friend, no one can move me, so how can I move for you? Please, you find another way and you reach to your destination. I don't have any problem. But as I cannot move, very politely the rock talks with bubble, but bubble talks very rudely with the rock. So what happens? We'll see, we'll learn in the poem. So let's start. First of all, I'll read the poem, then we'll line by line we'll learn the explanation of this poem. The Rock and the Bubble, Louisa May Alcott. Oh bare brown rock, oh bare brown rock, stood up in the sea, the waves at its feet dancing merrily. A little bubble once came sailing by, and thus to the rock it gaily cried, oh clumsy brown stone, quick make way for me, I am the fairest thing that floats on the sea. See my rainbow robe, see my crown of light, my glittering form is so airy and bright. O'er the waters blue, I am floating away to dance by the shore with the foam and spray. Now make way, for the waves are strong, and their rippling feet bear me fast along. But the great rock stood straight up in the sea. It looked gravely down and said pleasantly, little friend, you must go some other way, for I have not stirred this many a long day. Great billows have dashed and angry winds blown, but my sturdy form is not overthrown. Nothing can stir me in the air or sea, then how can I move, little friend, for thee? Then the waves are laughed in their voices sweet, and the sea birds looked from their rocky seat at the bubble gay, who angrily cried, while its round cheek glowed with a foolish pride. You shall move for me, and you shall not mock at the words I say, you ugly rough rock. Be silent, wild birds. Why steer you so? Stop laughing, rude waves, and help me to go. For I am the queen of the ocean here, and this cruel stone cannot make me fear.
Dashing fiercely up with the scornful world, foolish bubble broke, but rock never stirred. Then said the sea birds, sitting in their nest, to the little ones leaning on their breast, be not like bubble, headstrong, rude and vain, seeking by violence your object to gain, but be like rock, steadfast, true and strong, yet cheerful and kind, and firm against wrong. Heed little birdlings, and wiser you will be, for the lesson learned today by the sea. For the lesson learned today by the sea. Very good rhyme we'll find in this poem. So see, now line by line we learn what happened. As I told you, this entire story happened near the seashore, where a bubble came sailing from longer distance and it wanted to reach to the shore, happily wanted to reach to the shore, but there was a rock in the way, and the bubble demands to rock to move aside, and we know that rock cannot move aside, and the conversation happens. See, we learn. Oh, bare brown rock stood up in the sea. As I told you, in the sea there was a bare brown rock stood up. It means jutted, okay, fixed on in the sea. The waves at its feet dancing merrily, and many of the time the sea waves would come and dance on its feet as if this one is a livelihood, and at the feet the dash the sea waves and dance like. So here the poet, she has used personification, means human qualities are given to inanimate things. As at feet here this rock is standing in the sea. Standing is human quality which is given to the rock, inanimate thing, and even the waves are also dancing. So we know that waves cannot dance, but human quality is given, dancing human quality. At little bubble once came sailing by. Once what happened in this situation, once a bubble, you can see in the picture, came sailing by, some longer distance it was traveling by, and thus to the rock it did it gaily cry. Gaily and cry, see these two opposite words here, means very proudly the bubble shouted, looked towards and shouted to the rock what it said. See, oh clumsy brown stone. The bubble did not speak in polite way. It said very arrogantly, clumsy. Clumsy, it means the one who is very careless. Okay, clumsy brown stone. Why clumsy word is used? You know, the bubble think itself very precious thing which is floating in the sea, and it thinks that this rock should take care of the bubble and move aside to let it go. That's why clumsy word is used. Oh clumsy brown stone, quick make way for me. Demands to be aside and let me go. I am the fairest, fair, fairer and fairest. The fairest thing means the most brilliant thing or brightest thing in the world that float on the sea. There's no other thing brighter than me in the sea, bubble says. Now, see my rainbow robe, see my crown of light, my glittering form so airy and bright. In this stanza, see, the bubble says, see my rainbow robe. Why rainbow robe? Robe is a kind of dress, you know, which cover from neck up to, from completely head to toe complete. So see my rainbow robe. Why it is called rainbow? Because we know when bubble light falls on bubble, we see a kind of rainbow. We can see the colors which big bars, we can say pattern of 7 colors on the bubble. That's why here this rainbow robe it is called. See my crown of light. Crown of light again, why? Because when a bubble shine, when light, a tiny sparkle we can see on the top of the bubble when sun rays fall on it. Okay, so that tiny sparkle is known as crown of light. My glittering form, glittering means shining form, as we know bubble shines. Okay, so airy and bright, and so airy, airy means precious, or we can say very proudful, very worthy, and bright is very dazzling. And it says OER. OER means o'er. It's the abbreviation form of o'er. O'er the waters blue, because sea water is generally blue. समंदर का पानी नीला होता है, तो नीले पानी के ऊपर से वो बहते आया है दूर से. I am floating away, and I am floating away on the waters blue, to dance by the shore with the foam and spray. And foam and spray, these are my servants, and they are, even I have came here with them, and they are dancing for me, and they are my servant, they are helping me to go ahead. Now make way, for the waves are strong. It says, see, I am get astride on here waves, the strong waves. Okay, strong waves are my servants, the waves are carrying me with. So you make way, move aside and give me way to go. And their rippling feet bear me fast along. Rippling feet, you know, we see the ripples when we put something in the water, and generally waves also we can see in rippling form.
सो रिपल फीट, अगेन हियर वेव्स को यहाँ पे रिपलिंग फीट दिए है, ह्यूमन क्वालिटी दी है, राइट. बेयर मी फास्ट अलॉन्ग, और the waves wish to bring me on the seashore very quickly, so you move aside. Bubble says, Bubble demands here very arrogantly to the rock. Next, see, बट द ग्रेट रॉक स्टूड स्ट्रेट अप इन द सी. देखो इतने, अभी हमने देखा कि इतने में वो कितने ऑरोगेंटली यहाँ पे बबल बात कर रहा है रॉक से, बट रॉक की अभी रॉक कैसे बात करता है, ये पत्थर कैसे बात करता है, देखो यहाँ पे. बट द ग्रेट रॉक स्टूड स्ट्रेट अप इन द सी, बट जो रॉक था वो अपना अपना स्ट्रेट खड़ा है वहाँ पे, कुछ नहीं कर रहा है. It looked gravely down. Gravely is seriously. Just it took it seriously down and said pleasantly. Though the bubble spoke very arrogantly, but rock's quality is what? The one who has potential. जिसके पास potential होता है ना, उसका arrogance कहाँ दिखाना है उसको पता होता है. तो बबल के सामने रॉक क्या arrogance दिखाएगा? तो pleasantly उसको बोल रहा है कि little friend. See, he called, Bubble called to the rock clumsy, and rock is calling little friend. So this is difference you will understand. You must, little friend, you must go some other way. तो बबल, रॉक बोल रहा है बबल को, you must go other way, you must go other, you must go बोल रहा है, you can go नहीं बोल रहा है, you must go, तुझे जाना ही पड़ेगा, right, some other way. For I have not stirred, because मैं नहीं, यहाँ से मुझे कोई हिला नहीं सका है. This many a long day, बहुत दिनों से, from longer period of time I am fixed here, I don't know whom, by whom I have been fixed, but I am here fixed and I cannot move from my place for longer period of time, from long distance, I don't know from when. So it is impossible me to move aside. So you must way, and you have to find your another way, because I cannot move. The rock says to the bubble. Great billows have dashed. Again he says, see, great billows means powerful waves. Billows are powerful waves. Have dashed. बहुत powerful waves आए मेरे ऊपर, dash भी किया, टकराए मेरे से. एंड एंग्री विंड्स ब्लोन, उतना ही नहीं तो आसमान में बहुत बड़ा बवंडर उठा, बहुत तेजी से हवा चली. बट माई स्टर्डी फॉर्म, स्टर्डी मीन स्ट्रॉन्ग और वेरी फर्म फॉर्म, मेरा जो फर्म फॉर्म है, इज नॉट ओवरथ्रोन, मीन्स नो बडी कुड मूव मी फ्रॉम माई प्लेस. बहुत तूफान आए, बहुत आंधियाँ चली, बहुत डिफिकल्टीज का मैंने सामना किया, बट मैं मेरी जगह से हिला नहीं. इतने बड़े बड़े नेचुरल कैलेमिटीज से मैं लड़ा हूँ, वो मुझे हिला नहीं पाए. तो छोटे फ्रेंड, मैं तुझसे कैसे हिल पाऊंगा, या इट इज नॉट इन माई हैंड टू मूव फ्रॉम माई प्लेस. वेरी पोलाइटली द रॉक टॉक्स विथ बबल. अगेन सेज रॉक, नथिंग कैन स्टर मी, कोई भी मुझे हिला नहीं पाया. स्टर मीन्स मूव. इन द एयर और इन द सी, इट मीन्स आसमान में भी और समंदर में भी, ऊपर नीचे कोई मुझे हिला ना पाया. देन हाउ कैन आई मूव, लिटिल फ्रेंड फॉर दी. दी मीन्स यू, ओके, इट्स आर्किक वर्ड, पुराने इंग्लिश में यूज है, दी, दाई, दाओ, लाइक दिस. तो मुझे आसमान में कोई हिला ना पाया, बवंडर ने हिला ना पाया, ना लहरें हिला पाई, बड़े बड़े टोर्नेडोज आए, बड़े बड़े सुनामीज आई, नो बडी कुड मूव मी, बट हाउ कैन आई मूव लिटिल फ्रेंड फॉर दी. तो मैं तुम्हारे छोटे बबल के लिए कैसे मूव कर सकता हूँ. देन द वेव्स आर लाफ्ड. अभी रॉक ने ऐसा कहने के बाद देखो, वेव्स जो सर्वेंट्स कही है यहाँ पे बबल्स की, तो वो हंसने लगी. अगेन पर्सोनिफिकेशन. इन द देयर वॉइसेस स्वीट एंड द सी बर्ड्स लुक्ड फ्रॉम देयर रॉकी सीट. और सी बर्ड्स का भी अटेंशन चला गया अभी वो दोनों के डिस्कशन की तरफ, और वेव्स भी हंसने लगी. सो इट फाउंड द बबल समहाउ इंसल्टिंग. बबल बड़े रौब में आया था, बहुत ही बड़प्पन में वहाँ आया था, उसको लगा कि आई एम द क्वीन ऑफ द ओशन. इवन इट कॉल्ड इटसेल्फ एज द क्वीन ऑफ ओशन. तो डिमांड तो की, बट रॉक ने अपनी जो साइड है वो फर्मली उसके सामने रखी, बबल के सामने. तो देखो, एट द बबल गे, तो इस समय लहरें भी हंसने लगी, और जो पत्थर के बाजू में जो समंदर के किनारे पे जो बर्ड्स थे वो भी देखकर अभी वो भी उनकी तरफ अटेंशन देने लगे. एट द बबल गे, नाउ सी हैप्पी बबल गे इज हैप्पी. नाउ द हैप्पी बबल whom angrily cried, अब वो गुस्से में आया और चिल्लाने लगा. while its round cheeked glowed with a foolish pride. foolish pride, प्राइड होना चाहिए, देखो दोस्तों, प्राइड होना चाहिए, बट वो प्राइड फुलिश नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे बहुत ही फुलिश प्राइड के साथ उसके दोनों जो चिक्स है वो ग्लो होने लगे. और बबल, अगेन पर्सोनिफिकेशन, बबल को ह्यूमन क्वालिटी, चिक्स ग्लोइंग विथ फुलिश प्राइड. तो अब बबल को गुस्सा आ गया है कि मैंने कुछ कहा है, मैं एक सुप्रीम पर्सनालिटी हूँ यहाँ पे, और वो रॉक जो कि क्लमसी बुरा दिखाई दे रहा है वो मेरा नहीं मान रहा है. तो देखो क्या बोलता है गुस्से में, यू शैल मूव फॉर मी. शॉल देखो कैपिटल में दिया है, इट मीन्स इट्स स्ट्रेस, उसको ज़्यादा एम्फेसिस किया है. यू मस्ट मूव फॉर मी एंड यू शैल नॉट मॉक एट द वर्ड आई से, यू अगली रफ रॉक. और यू शैल नॉट मॉक, यू कैन नॉट मेक मी फन, मेक माई फन.
तो एट द वर्ड्स आई से यू अगली रफ रॉक। अगेन रॉक को बहुत ही अरोगेंटली बबल बात कर रहा है कि तुझे यहाँ से हिलना ही पड़ेगा, मुझे रास्ता देना ही पड़ेगा, यू रफ रॉक, तुझे बाजू को हटना ही पड़ेगा। और वो अभी सबको अभी स्कोल्डिंग कर रहा है, सबको अभी डांट रहा है। पहले तो उसने डांटना शुरू किया पत्थर से, यानी वो रॉक को पहले डांट रहा है। उसके बाद बी साइलेंट वाइल्ड बर्ड्स, बर्ड्स की तरफ देख के बोल रहा है कि बी साइलेंट, नो नीड टू लाफ, वाइल्ड स्टेयर यू सो, क्यों देख रहे हो मेरी तरफ, हमारी तरफ क्यों देख रहे हो, स्टॉप लाफिंग रूड वेव्स एंड हेल्प मी टू गो, और वेव्स को बोल रहा है कि हंसना बंद करो और हेल्प मी टू गो। देखो एज इफ हियर वी अंडरस्टैंड कि बबल अभी भी अपनी सुप्रीमेसी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, खुद को बहुत ही सुप्रीम मान रहा है और जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल करने को ट्राई कर रहा है। और जो उसके सर्वेंट यहाँ पे बताए उनको डांटना शुरू कर रहा है। होता है ऐसे, देखो कभी कभी है ना, हमारा काम कुछ अच्छा नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हमसे जो छोटे होते हैं ना उनको डांटना शुरू कर देते हैं। तो जनरली इट्स गुड ह्यूमन क्वालिटी here presented by Louisa May Alcott by the help of here the bubble. अगेन देखो क्या बोलता है, फॉर आई एम द क्वीन ऑफ द ओशन हियर, मैं तो रानी हूँ समंदर की, आई एम हियर एंड दिस क्रूएल स्टोन, देखो कितने एडजेक्टिव स्टोन के लिए यूज किए हैं, ओके, अगली, रफ, क्रूएल, क्लमसी, इतने सारे, एंड दिस क्रूएल स्टोन कैन नॉट मेक मी फियर, तो बोल रहा है कि ये क्रूएल अनकाइंड स्टोन जो है मुझे डरा नहीं सकता है, बिकॉज आई एम द क्वीन ऑफ द ओशन हियर। आगे देखो, डैशिंग फियर्सली अप, अभी फियर्सली यानी बहुत ही बुरी तरह से, फियरफुली, डैशिंग फियर्सली अप विद स्कॉर्नफुल वर्ड, स्कॉर्नफुल मीन्स यूजलेस वर्ड्स, ओके, इनसेन वर्ड्स, इस तरह के इनसेन वर्ड्स को कैरी करते हुए वो बबल जोर से यहाँ पे रॉक के ऊपर टकराया। फुलिश बबल ब्रोक बट द रॉक नेवर स्टर्ड, अब तो बबल तो फूट गया, राइट, बट रॉक नेवर स्टर्ड, रॉक जगह से हिला भी नहीं। देन सेड द सी बर्ड्स, अभी ये पूरा सीन खत्म हो गया, यहाँ पे हमें पता चल गया कि अब जो पोलाइट होता है उसके साथ क्या होता है और जो बहुत ही अरोगेंट होता है उसके साथ क्या होता है। सो अरोगेंट बबल यहाँ पे फूट गया, राइट, यहाँ पे दोनों की स्टोरी खत्म होगी। उसके आगे अभी देखो मॉरल शुरू होता है यहाँ से, यानी कि हमने ये पूरी स्टोरी अभी सुन ली है, तो एक टीचर और स्टूडेंट, अभी ये बर्ड और बर्डलिंग यानी हम है, राइट, तो देन सेड द सी बर्ड्स, ओके, यानी टीचर बोल रहा है, अभी हम इसको इस तरह से लेंगे क्योंकि you can understand the more clear meaning of this poem, sitting in their nest। अब तो हम बोल रहे हैं कि देखो भाइयों, to little ones leaning on their breast, तो यहाँ पे बर्ड अपने छोटे बच्चों को नज़दीक लेके बोल रहा है, leaning towards the breast, यानी उनको अपने दिल से लगा के बोल रहा है। क्या बोल रहा है देखो, be not like bubble, don't be like bubble, was very arrogant, okay, headstrong, rude and vain, okay, the bubble was headstrong, okay, rude and vain, useless bubble, don't be like useless the bubble, headstrong यानी हमेशा गुस्से वाला, don't be like bubble, seeking by violence all the time, उसको लगता है कि वायलेंस से ही सब होगा। आई, इस तरह के थॉट्स मन में रखो, योर ऑब्जेक्ट टू गेन, और तुम्हें लगता होगा कि तुम तुम्हारे ऑब्जेक्ट यानी तुम्हारे रिलेटिव्स और जो तुम्हारे कंसर्न पीपल है उनके ऊपर आप गुस्सा करोगे, वायलेंस से तुम्हारा काम चलेगा, तो डोंट बी लाइक दिस द बबल। बबल ने ट्राई किया वायलेंस के साथ रॉक को जीतने का, उसको पीछे हराने का, बट हमें पता है कि कौन और क्या हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे बर्डलिंग को सिखा रहा है कि डोंट बी लाइक रॉक, डोंट बी लाइक बबल, अरोगेंट, वेन, यूजलेस, लाइक, एंड हम यहाँ पे टीचर स्टूडेंट को बोलते हैं कि डोंट बी लाइक बबल, राइट। सो दूसरा भी मीनिंग हमें उसके साथ कैरी करना है। अगेन सी, बट बी लाइक रॉक, so be like rock, don't be like bubble and be like rock। क्यों be like rock? Steadfast, true and strong, okay, steadfast means always standing with very pride, or we can say with self esteem, true, सच्चे के साथ, it is said that truth is God, तो सच्चाई के साथ, I am ready to go to even hell for heavenly cause, or truth I am ready to go, it's the importance of truth we know। So we must be steadfast, true and strong, हमें सत्यवादी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, एंड steadfast, firm against strong, yet cheerful and kind, उसके साथ हमें cheerful और kind भी होना चाहिए, राइट, एंड firm against strong, और बुराई के अगेंस्ट हमें बहुत ही डटे रहना चाहिए, like rock, रॉक ने यहाँ पे पीछे हटा नहीं, और बुराई जो थी वो बबल बहुत अरोगेंट था तो उसके सामने वो डटा रहा। तो इसी तरह सच के साथ रहना है, बुराई के अगेंस्ट डटे रहना है, ये सीख यहाँ पे बर्ड अपने बर्डलिंग्स को दे रही है, या टीचर अपने स्टूडेंट को देता है बाय दिस पोएम। हीड लिटिल बर्डलिंग्स, हीड मीन्स पे अटेंशन,
Pay attention, little birdlings. Pay attention, my dear student, and wiser you will be, and you will be very wise, clever. For the lesson learned today by the sea, and today we have learned the lesson from the sea. So here Louisa May Alcott, very beautifully she narrated the story, and she has left a good moral or a good message for all of us, that how we should be. We should not be headstrong, and we can say even with someone very arrogant. So instead of, we should be steadfast, true and strong, and always firm against wrong. So then we can achieve the success in our life. So thank you very much for watching this. Thank you very much. One more thing, if you want the question answer of this poem, you just can simply message me. I'll share with you. My contact number is 9011970297. This is my WhatsApp number. You just put the lesson name there, just send me a message with the title of the lesson, whichever you want question answer, and I will share with you the answers. So thank you.